Good morning, my dear students. So again, I'm here for my grade 11 students to teach economics. So as you know, whole world is suffering with COVID-19 pandemic, and we are not able to attend our school in the school building like we were doing usually in the few months back. So no need to miss your school, but yes, your teachers are teaching now with the help of your e-learning. So, as you know, Cambridge International School, the SUA, has taken e-learning initiative so that our students still do well in their exams uh, when COVID-19 pandemic ends in the world and we are when we are going to back to the school. So uh, I'm here again with new topic for your studies. So let's begin with today's topic. So what we are going to do today, so we are going to choose the new topic now. So the chapter number is 6 and the chapter name is cost. So subject is economics and topic is types of costs we are going to learn in this, and grade is 11 and my name is Miss Sarita Sani. So I'm here to help you out regarding your economics learning. So before I should move to the further topic of your chapter, let me talk to you regarding some of the topics which we have covered in the previous chapter. So we are in the previous chapter we have learned about law of diminishing returns, law of variable proportions. We learned about total product, marginal product. We learned about average product. So all these things we learned with numericals, even we learned with graphs, with many things. So this is all about we have learned in the previous chapter. So here we are going to learn some few like some of the things which are going to be common, like in the previous chapter we learned about total product. Now here we're going to learn about total cost. So again we have the variable and fixed costs. We're going to learn about that. So in that we have done just fixed factors and variable factors. So some of the points are similar, but now we are giving more stress to the cost point. So let's begin with today's topic. Oh, I forgot to give you a tip for today. So yes, this is very, very important. Whenever we have to solve numerical in our this exam, so we have to copy the full numerical, and where the answers we are giving, like when we have to solve the numerical, so we have to make the like solving rough work on the left hand side. On the left hand side where you can make a line, or in the board exams it was already there, so you can do your rough work on that and then give answer on the same question which you have to, like, there is a table, so you have to give the answer in table, so you have to make it as it is and fill the blanks which are given to solve your question. So this is how we are attempting your numericals in the case of cost and products. So production function we have done like that. Fine. Now let's move to the first topic of today. So there are many topics which we are going to cover today. So the first topic is introduction, then is meaning of cost and types of cost. So then afterwards, after these three topics, we are going to learn about questions to be done for today. So we'll do questions like we were doing in the previous classes. So let's begin with the first part of your chapter, that is in. So till now we have learned the certain things. So let's have a recall, and we will now introduce the concept of cost here. So we studied the various concepts and laws related to behavior product. So we have learned about all the things, laws and concepts related to production. So a firm uses various inputs to produce goods and services. We learned all these things. Firms has to make payments for such inputs as they do not come free. So जब भी कोई कंपनी कुछ बनाती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल क्या होगा? इनपुट होगा. सो इनपुट जो है
वो हम हमेशा पैसे से खरीदते हैं, पेमेंट्स करके खरीदते हैं. द एक्सपेंडिचर इंकर्ड on these inputs is known as cost of production. So what we call it as? We call it as cost of production. जो भी चीज हमें inputs खरीदने पे जो भी हमें खर्चा देना पड़ा, we call it as cost of production. So since production costs are important determining firm's output, we will understand several aspects about a firm's output. So जब भी हमने cost को समझना है, cost के point को हमने डिटेल में समझना है, तो उस पॉइंट पे हमें क्या समझना पड़ता है कि हमारी जो फर्म है उसकी आउटपुट कैसे आई. सो क्या क्या कॉस्ट हमारी वहां पे इन्वॉल्व हुई. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट्स. सो now, we will understand several concepts about the firm's cost in this chapter. So, we're going to learn about this. Then, comprehensive study will lay the foundation of understanding supply decisions of business firms. So, many things we are going to learn about this supply and demand, even related to this topic. So, let's begin now. So first we have to understand the meaning of cost. So when we talk about the cost, the very first thing is cost is the total expenditure. जितना हमने total खर्चा किया किसी चीज को बनाने में, ठीक है, incurred in producing a commodity. So we call it as cost. ठीक है. So in economics, cost is the sum total of one type of cost is explicit, another is implicit. Explicit is जब हमें कोई बाहर से जो है इनपुट्स वो लेनी पड़ेंगी, ठीक है, उनको हायर करेंगे, ठीक है, और उनके हिसाब से हम लोग अपनी जो है मनी उनको पे करेंगे. सो वी कॉल इट एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. व्हाट वी कॉल इट एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट में होता है जब हम अपने ही इनपुट्स जो हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, तो उन्हीं को जब हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज जब उनकी ले ली, वी कॉल इट एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट को पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स or payment made to outsiders for hiring their factor services. So factors of production we are done. So उनमें से किसी भी फैक्टर की अगर हमने उनको हायर किया है, जहाँ हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं, जो वो हमारे लिए यूज कर रहे हैं these factors, so we call it as explicit cost. ठीक है. wages paid to the employees, जो हमारे employees है, they are the part of not the organization but they are the outsiders. So जब हम उनको पे करेंगे that will be your explicit cost. Then rent paid for hired premises, हमने कोई जगह ली थी जिसको हायर किया था, ठीक है, हमने किराए पे लिया था और उसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है. So this is the explicit cost. Next is payment for raw material. Raw material भी बाहर से आएगा तो obviously हम उसके लिए भी पे करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, explicit cost कहेंगे. Implicit cost क्या होता है? It is the estimated value of the inputs supplied by the owners including normal profit. तो implicit cost क्या होता है कि estimated value है जो हमारा जो है this जो हमारा है सब ओनर, उसको जो सप्लाई किया गया था जिसमें सिर्फ हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही मिले थे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल. मेरे पास अपना पैसा पड़ा था, मैंने उसको लगा दिया बैंक में, सॉरी जॉब में, कंपनी में लगा दिया, फर्म में लगा दिया, तो उसका जो बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी माइन. नेक्स्ट इज rent of own land, salary of for the services of entrepreneur, etc. Such costs are called costs of self-supplied factors. ठीक है. अब मान लो अगर मैं ही मैनेजर हूँ और मैं ही कंपनी को रन कर रही हूँ, आई एम द ओनर. So in that case, what I will do? I will just save one salary for manager to me, and another one rest I will send to the foreign country where I'm just supposing somebody is settled. ठीक है. तो ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है. वी कॉल इट एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. नाउ जब दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो वी कॉल इट एज कॉस्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर. Now the next topic is cost. So cost in economics includes actual expenditure on inputs, that is explicit and imputed value of the inputs supplied by the owners. ठीक है. सिंपल चीज है. कॉस्ट क्या है, दोनों चीजें पे, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट, दोनों पे जो हमने कॉस्ट लगाई है
उसका जो टोटल एक्चुअल एक्सपेंडिचर आएगा फॉर इनपुट्स, सो वी कॉल इट एज कॉस्ट, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट में आता है कि जो हमने अपनी जो हमारे हमने बाहर से फैक्टर्स लिए हैं उनको जब भी यूटिलाइज किया उनके लिए जो कॉस्ट आई, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड इम्प्यूटेड वैल्यू, इसका मीनिंग होता है कि हमने जो अपनी खुद की जो रिसोर्सेज है हमारे पास अवेलेबल है और उसकी जो कॉस्ट हमने एज्यूम करी है, दैट विल बी द कॉस्ट, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स नॉट ओनली द अकाउंटिंग कॉस्ट बट ऑल्सो द इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो अकाउंटिंग कॉस्ट को नहीं करते हैं वो, यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। द सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। सो दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आता है सम। सो दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर पॉइंट, how to measure implicit cost. Implicit cost is measured by determining the value of self-supplied factors in terms of their market price. ठीक है, मेरे पास मान लो खुद की मशीन थी, ठीक है, और मैं अपनी फैक्ट्री में काम कर रही थी। अब उस मशीन की वैल्यू जितनी मार्केट में है मैं उतनी ही वैल्यू अपने हिसाब से पा के अपनी जो है बिजनेस के एक्सपेंसेस प्रॉपर कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो निकाल लूंगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ अ डॉक्टर हैज ओपनड अ क्लिनिक एट हिज होम, देन imputed वैल्यू ऑफ सैलरी फॉर हिज सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, इंक्लूड होगी, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या है, वैल्यू ऑफ सैलरी विल बी कैलकुलेटेड on the basis of salary that would receive if he is employed by someone else। तो हमें ये मान के चलता है कि अगर उसकी खुद की कंपनी है तो उसे ये होगा कि जैसे दूसरे लोग करके जा रहे थे उनके साथ, ठीक है, उसी हिसाब से क्या है सैलरी जो है दूसरी कंपनी के साथ अगर वो एम्प्लॉय होता तो उसको कितनी सैलरी मिलती। सो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग आउट द implicit cost. Now implicit cost is calculated because if such factors were not owned, वो किसी के है ही नहीं, किसका कुछ लेना देना ही नहीं, ठीक है। सो एंड यूज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, और बिजनेसमैन उसको यूज करता है इन हिज फर्म, देन ही वुड हैव हायर्ड देम फ्रॉम आउटसाइडर्स, या तो वो बाहर से कोई बंदा मंगवाएगा, ठीक है, उनको काम करवाने के लिए। सो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर्स दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट को इम्प्यूटेड वैल्यू जो होती है उसको भी हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं इन द टोटल कॉस्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज explicit versus implicit cost. So explicit cost क्या होती है, it is payment made to the outsider for hiring factor services। जब हमने कोई भी फैक्टर सर्विसेज को हायर करना है, ठीक है, तो उनको जो पेमेंट करेंगे उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जब आउटसाइडर्स को करते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल फैक्टर्स थे उनकी जो कॉस्ट आएगी, दैट विल बी इम्प्लिसिट कॉस्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग एंड हायरिंग इनपुट्स। सो ये यहाँ पे पैसा लगाएंगे, इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग एंड हायरिंग इनपुट्स। सो यहाँ पे क्या है, जा तो वो रिसोर्सेज बाय करेंगे या फिर उनको हायर करेंगे, सो इसके ऊपर जो पैसा लगाएंगे दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इन इम्प्लिसिट कॉस्ट में कहता है इट इन्वॉल्व्स इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर्स owned by the firm, there is no money payment। सो यहाँ पे क्या इम्प्यूटेड वैल्यू जो है फैक्टर्स की वो खुद अपनी ओनर लगाता है, ठीक है, बाय द फर्म, बट यहाँ पे उसको कोई भी पेमेंट नहीं होती है कंपनी की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, पेमेंट्स ऑफ वेजेस रेंट्स। Now, payments of wages, rent, insurance, premium, etc. So all comes under explicit cost. ठीक है, हमने outsiders को करी है सारी payments. Then is interest on capital, ये तो अपनी capital है, उसी के ऊपर जो interest आया। Rent of own land, अपनी जमीन का जो हम rent assume करें, impute कर रहे थे, ठीक है, so वो सारी क्या जाएंगी, implicit cost में आ जाएंगी। Now let's move to the next topic, that is कॉस्ट फंक्शन। नाउ कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप है आउटपुट के साथ, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो जब भी हम लोग कॉस्ट फंक्शन की बात करेंगे दैट मीन्स कॉस्ट एंड आउटपुट का क्या रिलेशनशिप है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। सो कॉस्ट फंक्शन क्या करता है,
हमें कॉस्ट एंड जो आउटपुट है उसमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा. सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज C is equal to F function of Q, so that is output. ठीक है, so where C is cost of production, Q is a quantity of output, so F is functional relationship. So this is what the cost function is. So cost is directly this functional to output. Now let's. So opportunity cost, this we have already covered. So the cost of the next best alternative foregone. So I've done with you already. So let's just have a look on this. The concept of opportunity cost is very important as it forms the basis of the concept of cost. When a firm decides to produce a particular commodity, जब कोई भी कंपनी एक particular commodity को बनाने की सोच लेती है, ठीक है, so then it always considers the value of alternative commodity. तो बाकी जो alternative commodities already available है उनकी भी वो value देखते हैं, ठीक है, which is not produced, जो उन्होंने खुद produce नहीं करी, ठीक है. So the value of the alternative commodity is the opportunity cost of the good that the firm is now producing. So यहाँ पे क्या चीज आई, जो value है alternative commodity is the opportunity cost of the good that the firm is now प्रोड्यूसिंग. सो उनके लिए बेनिफिट हो जाता है, ठीक है, जब ऑल्टरनेटिव कमोडिटी द वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिव कमोडिटी इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जब हमने ऑल्टरनेटिव वैल्यू मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो गया वो, ठीक है, उसको जब हमने यूज किया तो उसकी वजह से क्या आता है, ऑफ द गुड दैट द फर्म इज नाउ प्रोड्यूसिंग, तो उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी एक और मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल सपोज अ फार्मर कैन प्रोड्यूस इधर 50 क्विंटल्स ऑफ राइस और 40 क्विंटल्स ऑफ wheat on his land with the given resources. So if he chooses to produce rice, then he will have to forego the opportunity of producing 40 quintals of wheat. मतलब हमें एक ही चीज चूज करनी है, सारी नहीं करनी. बेस्ट ऑल्टरनेटिव वही होएगा हमारे लिए. Now the next is types of costs. So there are different types of cost. Let's see. Now, the next thing is money cost. So we're going to learn about the types of cost, and the first type of cost is money cost. Money cost refers to the total money expenses incurred by a firm for producing a commodity. ठीक है, जितने भी एक फर्म ने टोटल प्राइस, टोटल मनी जो है, एक्सपेंसेस जो लगाए, खर्चे किए, ठीक है, सो वी कॉल इट एज मनी कॉस्ट. सो व्हाट वी कॉल इट एज मनी कॉस्ट, क्योंकि मनी टर्म्स में है वो, ठीक है. So money cost arises due to transactions between a firm and the other parties. तो money transactions क्या होती है, जितनी भी सारी की सारी parties ने जो भी transactions करी है, जितना भी पैसा लगाया, that we call it as money cost. ठीक है, firm makes payment to other parties for use of their physical inputs or services. ठीक है, firm क्या करती हैं, पेमेंट करती हैं अदर पार्टीज को, जितने भी वो इनपुट्स यूज करती हैं. कई बार सर्विसेज के केस में ऐसा होता है. सो इन हम कॉस्ट को, मनी कॉस्ट को हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं. इसके एग्जांपल्स है प्रोडक्शन कॉस्ट, लाइक वेजेस एंड सैलरीज देते हैं, रेंट देते हैं हम लोग, एक्सपेंसेस देते हैं, पावर एक्सपेंसेस ऑन पावर, जो बिजली का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस मनी कॉस्ट. नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट, लाइक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आ जाती हैं, ठीक है, ये सारी इसमें आ जाती है. देन है अदर कॉस्ट लाइक इंश्योरेंस चार्जेस, टैक्सेस एटसेट्रा, दैट कम्स अंडर मनी कॉस्ट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ व्हाट इज द रियल कॉस्ट. किसी भी चीज को करने के लिए जो हम पेन, सेक्रीफाइस, डिस्कम्फर्ट, डिसयूटिलिटी, सबको हम लोग जो सहन करते हैं, तो वी कॉल इट एज रियल कॉस्ट. ठीक है, इट इज कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, सो इसको हम लोग कहते हैं जितना भी हमने पेन बर्दाश्त करी है किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए, सो वी कॉल इट एज रियल कॉस्ट. नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स बाय लेबर इन डूइंग द वर्क. फिजिकल एंड मेंटल, जितना भी हमने टॉर्चर सहते हैं हम लोग काम करने में, ठीक है, जितना भी लेबर में हम लोग लगाते हैं, ठीक है, फॉर कोई भी काम करने के लिए, वी कॉल इट एज रियल कॉस्ट. ठीक है, सो द कंसेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट हैज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस एज इट इज साइकोलॉजिकल एंड अनरियलिस्टिक इन नेचर. ये हमारी कॉस्ट जो है एज सच किसी भी मनी टर्म्स में एग्जिस्ट नहीं करती. यस,
ये जो है एक अनरियलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, ठीक है, जो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। द ह्यूमन एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस मेड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ मनी। सो इसको हम लोग मनी टर्म्स में एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, एवेलुएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज रियल कॉस्ट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज private cost. Private cost refers to the cost of production incurred by an individual firm in producing a commodity. So private cost क्या होती है? Private cost जो है इसको हम लोग कहते हैं वो cost है जो एक individual फर्म जो है लगाती है, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, जो उसने अपनी तरफ से लगाई है, ठीक है, तो वी कॉल इट एज प्राइवेट कॉस्ट। सो इट इज द कॉस्ट इंकर्ड बाय फर्म ऑन हायरिंग एंड परचेजिंग इनपुट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। कोई भी हमने बाहर से कोई सर्विसेज हायर करी हैं अपनी तरफ से, तो वी कॉल इट एज प्राइवेट कॉस्ट। दिस कॉस्ट हैज नथिंग टू डू विद द सोसाइटी, सो इसका सोसाइटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज the social cost. Social cost includes disadvantages suffered by the society due to the production of a commodity. Now, थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट आया था कि जब हम कोई फैक्ट्री खोलेंगे तो वो हम लोग पॉपुलेटेड एरिया में नहीं खोलेंगे, हम लोग कहाँ पे खोलेंगे? द एरिया विच इज वेयर वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो जो एरियाज होते थे वो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज और आउटस्कर्ट्स जो होता एरिया ऑफ द like state, so they were just making their factories over there, ठीक है। सो अगर कोई फैक्ट्री उस एरिया में है, ठीक है, सो उसका इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, तो जिस कॉस्ट में उनको डिसएडवांटेजेस मिले तो वो हम लोग कहते हैं सोशल कॉस्ट है। सोशल कॉस्ट डज नॉट कंसिडर द मनी कॉस्ट बट इट टेक्स इनटू अकाउंट डिस्कम्फर्ट्स बोर्न बाय द सोसाइटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब मेरी सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने कोई केमिकल बनाने की इंडस्ट्री खोली, ठीक है, उस इंडस्ट्री का जो केमिकल का वेस्ट था वो सारा जा रहा था मेरे जो आसपास वाले लोग थे उनकी वो नीचे गटर जो है सारे वहां पे पहुंच रहा था, ठीक है, और अल्टीमेटली वही जो पानी था रिफाइन होके हमें मिल रहा है, ठीक है। अब उसकी वजह से कुछ लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे एक आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ दिस बठिंडा एरिया। सो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया था इंडस्ट्रीज लगाने की, लोगों ने क्या किया, पॉपुलेटेड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगा दी, और उन इंडस्ट्रीज में क्या हुआ था कि जो लोग थे ऐसे डिस्पोज ऑफ करते जा रहे थे जो केमिकल वेस्ट था, ठीक है, उनकी जो फैक्ट्रीज का था, उसकी वजह से लोगों को क्या हुआ, अल्टीमेटली people maximum people in that area were suffering with cancer. So this is like people were suffering with cancer, so that is the social cost they have to bear for flourishing industries in their area. So for example, by cutting down of trees by a private contractor, so अगर किसी ने वो trees काटे और वहां पे वो कुछ बनाया, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। Society incurs social cost in the forms of health hazards like increase in air pollution. So all these points are the example of this. Cancer का जैसे मैंने आपको बता दिया, so social cost is the last type of cost. Now let's move to the questions for. So the questions to be done for today is define cost, then you need to explain difference between explicit and implicit cost, then define cost function, then define the following costs. So all the types of costs you need to explain: opportunity, money, real, private, and social cost with examples. Thank you so much. Now I would say in the last, so thank you so much. God bless you. Enjoy learning at home and pray for humanity so that this COVID-19 situation ends soon and we will be back to school and meet soon, and we will be do our learning in a best way, and we have to make our school at the top position in all India level. So with this note, I'm happy to teach you every day online and try to give you maximum which I can give you. So if still you find any of the topic that is not clear to you, I will definitely solve your queries, and in the end I would say focus on your studies, learn well, do exercise at your home, take care of your parents and grandparents, stay happy, stay healthy, and learn with Cambridge International School, the SUA. So bye-bye for today. Now we will meet again tomorrow. God bless you.